Arunachal Pradesh, the land of Dawnlit Mountain, is situated on the extreme east part of India with a long international boundary with Bhutan, China and Myanmar. The population of the state is very less, hardly 11 lakhs, which is scattered in 16 districts. The population density of Arunachal Pradesh is only 13 per square kilometer, which is the most sparsely populated state in the country. High mountains and dense forests have prevented intercommunication between tribes living in different river valleys. Hostile terrain, lack of motorable roads, excessive rain, frequent roadblock due to landslides, etc. led to isolation of tribal population from the outside world. The people are even deprived of basic health services like immunization, institutional deliveries, referral and tertiary care. There is not enough health awareness among the rural illiterate and uneducated people, for which many seasonal diseases and other communicable diseases occur. Dysentery, diarrhea, typhoid, tuberculosis, malaria are very common in Arunachal Pradesh. Therefore, providing primary health services to the people is need of the hour. Karuna Trust, established in 1986 by Padma Shri Dr. H. Sudarshan, a public charitable trust affiliated to the Vivekananda Girijana Kalyana Kendra, is located in BR Hills, Karnataka. In 1996, Government of Karnataka gave the responsibility of managing primary health center Gumbali to Karuna Trust. This was an unique and pioneering example of public-private partnership in primary health care, which ultimately strengthened the idea of PPP in the country. In the year 2005, Government of Arunachal Pradesh decided to implement the pilot project of public-private partnership to improve the health facilities in the state. Karuna Trust is providing 24 hours emergency casualty services, OPD service for 6 days per week as per the timings specified by the state government, 5 to 10 bed inpatient facility, 24 hours labor room and essential obstetrics facility, minor operation theatre facility, 24 hours ambulance facility, make available essential medicines and laboratory facilities, participation and implementation of national programs of health and family welfare, including the National Rural Health Mission. Management of sub-centers attached to the PHE. Karuna Trust was selected to manage 9 primary health centers in 9 districts of Arunachal Pradesh.
में देखा है 2 डॉक्टर हो गया और नर्स हो गया, बहुत सफिशिएंट सर्विस चल रहा है। Of the hospital is such that it is very difficult to reach. It is so remote, and most of the time throughout the year it remains cut off from the main place for about 6 months. In spite of all this constraint, we are running it smoothly so far as far we can. We are covering about 63 villages. हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक आपका OPDs, IPDs, लेबर रूम्स 24 आवर्स हम सर्विस देते हैं। इसके बाद लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ लाइक मलेरिया का स्पूटम टेस्ट वगैरह हम देते हैं, और इसके बाद माइनर OT वो भी करते हैं, ड्रेसिंग वगैरह यहाँ भी करते हैं। और फार्मेसी, ये है फार्मेसी हमारे, तो फार्मेसी भी हम लोग का मेडिसिन भी काफ़ी है, अच्छा है यहाँ पे पूरा अवेलेबल है। जो पहले का जो गवर्नमेंट जो यहाँ पे जो हॉस्पिटल रन अप किया था, उस समय में यहाँ पर बहुत तकलीफ माने मेडिसिन का प्रॉब्लम, इधर उधर स्टाफ जो है यहाँ रहता नहीं है। कम से कम यहाँ मुश्किल से एक ही स्टाफ था, वो लाता बोल के, उसका द्वारा डॉक्टर का भी वो चार्ज लेता था, सबका वो उसका द्वारा से बामी चलता था। तो अभी यहाँ देखा है, जहाँ तक दिखता है अभी का जो परिवर्तन, इतना आसमान ज़मीन का फ़र्क हो गया। यहाँ NGO आके कम से कम हमारा यहाँ में कम से कम थोड़ा दुख तकलीफ को कम से कम शेयरिंग कर पाता है। जो वायरस यहाँ में हम लोग का गाड़ी का जो फेयर है सिर्फ तो बामिंग के लिए 200 लगता है। अभी छोटा मोटा बीमार के लिए यहाँ कोई जाना नहीं पड़ता है, पैसा भी बचत होता है और बीमार से भी यहाँ में पहले तो वैसे पेशेंट भर्ती करने का जगह नहीं था, तो अभी पेशेंट मतलब ये करके यहाँ भर्ती एडमिट कर सकता है, मतलब उसके बाद और ब्लड वगैरह टेस्ट करके यहाँ अभी रिजल्ट मतलब दिन में टेस्ट करेगा, दिन में ही रिजल्ट देता है। पहले ये सब नहीं। Having different departments here, namely OPD departments. We have got 2 OPDs, then laboratory, pharmacy, minor OT, labor room, all separate one, and rooms for female and male IPD patients. Technically, we are all well equipped, and at present, I am having 24 staffs to deal with it, in which 6 ANMs are included. 2 GNMs are there, 3 health assistants are there, there are pharmacists are also there, then 1 lab tech is also there, and X-ray technician also. Moreover, in cases where we need referral, we have got ambulance which is in very good condition.
1800 से लेके 2000 तक होता है, लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ है कि मेडिसिन कमी है। हम लोग पूरा मेडिसिन देते हैं। यहाँ के डॉक्टर साहब ने, माते डॉक्टरों ने हमको ये बहुत मेडिसिन, इंजेक्शन और ये सैलाइन वगैरह बहुत दिया है। लगभग आज दो महीना से ज़्यादा हो गया हम इस मेडिकल में। हमने इस मेडिकल को देख के बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आजकल तो एंजियोपैथी आया है, इसलिए अच्छे से चल रहा है ऐसे बोले। गवर्नमेंट से मंगा हुआ डॉक्टर तो कभी भी यहाँ आया भी नहीं। हम लोग सिर्फ भागते रहते हैं, हम लोग बोलते रहते हैं। लेकिन आजकल आप लोग का एनजीओ जब चलाया था, उसी से अभी कोई इतना खास कोई प्रॉब्लम तो नहीं था। तो और भी ऐसे कुछ आप लोग को हम लोग डिस्कशन करने से, बात करने से और भी आगे बढ़ेगा बोल के सोच रहे हैं। कोरोना जब से शुरुआत किया है, जो भी काम हुआ अभी तक ठीक ही चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ में पेशेंट लोग को 20-15 तक तो हर एक दिन यहाँ में रख करके उनका सेवा देख करके ही हम पब्लिक जो है बहुत खुशी में है। Waka Circle is one of the most backward place of all of Arunachal Pradesh. So this Tirap district has been declared as a disturbed area, and army has been given special powers here. Here, the major problems which we are facing here is, one is the insurgency, another thing is that opium addiction, and besides some other problems like the development activities have not taken place properly here. And when I reached here, there was no proper the PHC, the present location which it is there, it was not there. One small room was there, one doctor was there, and the doctor was also very irregular. Sometimes he was being attached at Khonsa. So, and a few staffs were there. And I myself visited several times to that PHC, and at that time I could find that the medical officer was, most of the time he was absent. And there was one chogi there. Then the chogi there, he knew something about the medicines. He used to distribute those medicines to the people. And it is very unfortunate that at that time, due to his experience, though he was illiterate, the chogi there, by seeing the color of the medicine, he was just assessing that, giving that medicine to the persons by assuming that the medicine will suit their particular disease. So this was a condition here. After the proposal given by the government under PPP, so the Karuna Trust, it is more or less a boon to the people of this area. To be frank, this PHC of Waka is one of the best PHC in whole of Tirap district. The main trust area of Karuna Trust is outreach activities. The trained ANMs and health assistants go to the villages regularly for ANC, PNC, immunization and health education. ये यहाँ पे जितने सारे आउटरीच विलेजेस हैं रिमोट एरियाज में, वहाँ में हमारे हेल्थ असिस्टेंट और ANM बहुत सारे काम करते हैं। नंबर 1 वो फुल हाउस सर्वे करते हैं, जिसमें उसका सैनिटेशन और अदर कम्युनिटी हेल्थ उसमें इंक्लूडेड है। ANMs को भी हम लोग विलेज सर्वे के लिए हम लोग भेज देते हैं। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, ANC, PNC वो लोग वहीं पे चेकअप कर देते हैं, और हम वहाँ पे 0 to 5 years का कितना बच्चा है उसको हम लोग कलेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन कितना करना है बोल के हम लोग का बात नहीं है, हम लोग कितना बच्चा रह गया है उसको हम लोग इम्यूनाइजेशन के लिए हम लोग ये करके कलेक्ट करके वहाँ में इम्यूनाइज करते हैं। Karuna Trust is also taking initiative in selection and training of Ashas, implementation of JSY scheme and formation of Rogi Kalyan Samiti.
improve the skill and knowledge of the staff, the Trust has been organizing training program from time to time at Itanagar and Rowing. Training program was also conducted for laboratory technicians and pharmacists at Tejpur Military Hospital, Assam. Realizing the importance of Panchayati Raj institution leaders for improvement of community health, Karuna Trust conducted a series of training programs for 8 districts. Karuna Trust is committed to proper implementation of NRHM programs, formation of village health and sanitation committees, sub-center committees, organizing Village Health and Nutrition Day, implementation of JSY and ASHA schemes, promoting institutional deliveries, health awareness campaign, and 100% immunization are the major challenges for coming days. In spite of all the hardships and difficulties, the team of Karuna Trust strive to provide an equitable and integrated model of healthcare, education, and livelihood by empowering marginalized people to become self-reliant.